Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, children. Very good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. One thing I want to tell you today Morning, regarding your question answer of the previous lesson. Previous lesson के question answer में एक बात की ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप जो इक्वेशन लिखते हो केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस में यू राइट इन वन लाइन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में, उसको डबल लाइन में नहीं लाना है. That will be a wrong process. वो wrong process होगा. That will be a wrong way to write that equation. Equation should always be written in one sentence, one line, so that you can compare the reactant and product. Reactant और product को compare कर सकते हो उस तरह से. ऐसे आप reactant side में product लिख दोगे तो that you will be confused that which is the reactant and how to balance it. Okay? तो ये कभी भी गलती नहीं करिएगा. Like suppose हम अगर water का reaction लिख रहे हैं तो H2 plus O2 is 2H2O. ये ऐसे नहीं लिखना है. This is wrong. ये wrong है. This is wrong. आपको हमेशा क्या लिखना है? You have to write this way. Reactant on the left hand side, 2H2 plus O2 will give you 2H2O. ये एक ही लाइन में one side it will be reactant, ये reactant होगा और ये product होगा. This is very very important. Balancing के लिए भी और that is a wrong method to write. सबको बात समझ में आ गई? Yes, Yes ma'am. or no? Yes, ma'am. Don't do that mistake. बार बार बताने की जरूरत ना पड़े. और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा सिंबल्स राइटिंग में. लाइक सपोज HCl लिख रहे हो, बहुत सारे बच्चे HCl लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं. इज इट करेक्ट? ये करेक्ट है? No, ma'am. No, That is ma'am. not correct. ये wrong है. This is the correct method. क्लोरीन में क्लोराइड का C कैपिटल होता है और L स्मॉल होता है. ये सारी बातें आपको अभी सीखनी है इन क्लास 7. That is why I am telling you. ये है आपको जो आपको Please mute your mic. सब लोग अपना माइक म्यूट कर में रखिए. And no sound should come from your side. सब लोग. अमन वर्मा, please mute your mic. सुधांशु कुमार, सब लोग अपना माइक म्यूट पे रखिए. निधि महाराज, जब हम बोलेंगे then you open it. Soumya Shreya, because whatever the sound is there in your house, that is captured over here. So you just mute it. Abhi, because we need an interactive class.
If I will mute, I can't talk to you. Okay, चलिए. Let us come to this chapter, heat. Yesterday we were in the introduction part, and we have discussed that heat is the just a experience, a sensation, a feeling that we can say that this substance is hot or this is cold. ये हम लोग कल कर चुके हैं. Or we all also know that the transfer of heat takes place from a higher temperature to a lower temperature. We have talked that whenever we have to decide about heat, that is it hot or cold, then we talk about its temperature. Here we are going to talk heat and temperature. If we talk about this topic, then we can say that it is a form of energy which can flow from a higher level to a lower level. Higher level से lower level पर move करता है, and it is in the, you can say, in the form of energy. Energy के form में इसलिए है कि because it is capable of performing any of the activity. अगर आप heat supply कर रहे हो तो कोई ना कोई आप उसमें change देखोगे, उस substance में कोई ना कोई change आएगा. So that we will study in effects of heat. This topic, effects of heat, for that we will have to discuss two types of changes. First, that is physical change, and second one, that is chemical change. In physical change, there are certain changes: change in temperature, change in state, and thermal expansion. So let us first talk about these topics in detail. Detail में इस topic के बारे में बात करना है. That if we are talking about change in temperature की बात कर रहे हैं, तो what we will do, what we will say, we will say that if there is addition, अगर addition है, तो if the addition is there in the, if you are adding heat, अगर heat को अगर आप add कर रहे हैं, तो क्या होगा? What will happen? If there is addition of heat, I want the answer from your side. अगर किसी चीज में आप heat supply कर रहे हो, repeat the question? yes, there will be an increase in temperature. Pardon? Increase in temperature of that object. Increasing of temperature. Increase the increasing of temperature. There will be increase in temperature. Yes. Like suppose if you are keeping a frying pan on your say gas or stove, क्योंकि आपका heat का अभी जो आप देख रहे हो सप्लाई कहाँ से हो सकता है? घर में तो आपको गैस स्टोव से ही हो सकता है. तो आप क्या देखते हो? When that pan is kept, after a few minutes, it gets hot, and then your mother starts cooking food. So we can say that addition of heat can increase the temperature of that substance. Any substance it can. Clear? इसके लिए आप थोड़ा एक एग्जाम्पल ये भी करोगे, ये भी देख सकते हो कि आप एक ऑब्जेक्ट ले लो, बट डोंट डू इट इन योर होम. आपको वो सेफ नहीं है. We will do it when we will meet in the class. आप एक ऑब्जेक्ट ले लो, सपोज कर लो कोई भी एक बोर्ड ले लो, एक पिन ले लो, उसको एक स्पैचुला से होल्ड करके कैंडल के पास ले लो. आप देखोगे कैंडल का टिप, कैंडल के पास अगर आप वो नेल को या स्पून को आप कैंडल के पास ले जा रहे हो, तो यू होल्ड इट विथ अ स्पैचुला. एक स्पैचुला से होल्ड करिए, नॉट विथ योर हैंड. Then you will see that a spoon becomes metal spoon, not plastic spoon. Plastic spoon में क्या होगा? It will start melting because its melting point is less. Metal spoon को आप वहां ले जाओ और थोड़े देर के बाद आप देखोगे कि वो आप रेड हॉट हो गया वहां पे कैंडल. उस कैंडल से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और वो उसका अगर उस समय हम
क्या कैसे फील कर सकते हैं? उसमें हम थर्मामीटर तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसको हम ये कह सकते हैं कि we are not able to catch it with our hand. Why? Because it has become, its temperature has risen and we cannot tolerate that temperature with our hand. We can hold it with a spatula. Then this is for addition of heat. What about removal of heat? अगर heat हटाते हैं, किसी चीज से subtract करते हैं, तो what will happen? Temperature will decrease. Temperature will decrease. Fall down, वो substance cool down कर जाएगा. So there will be a change in that object due to addition of heat also and due to removal of heat also. In both the cases, we will have a change in that substance or in that object. Clear? Then comes change of state. What is this change of state? Children, we all know that matter existing. Please stop talking. हम आपको स्टार्टिंग में क्लास में ही बोले थे ना कि आप अपना सब लोग ये बंद करो. उत्कर्ष कुमार, अमृतांश, उत्कर्ष कुमार, from your side only the noise is coming. Otherwise, I will remove you from the class. Utkarsh Kumar, A7F. Just mute your mic. Then, and please don't disturb children. In that way, the time is wasted. आप लोग इस बात को समझिए. I just don't want that your time should be wasted, because if we are getting 40 minutes, that should be utilized in a full strength. Now here, change of a state we are talking. Then we can say that change of a state takes, there are 3 states of matter. That is what I was telling. The 3 states of matter are solid, liquid and gaseous state. A very good example we can take from water. Water का एक बहुत अच्छा example ले सकते हैं. कैसे ले सकते हैं? First of all, water has got that capacity to change its state in all the 3 forms. Like if it is in solid state, it can be ice. If it is in liquid state, it can be water. And if it is in gaseous state, it can be in vapor form. So this is a very good example to be taken, that if we are supplying heat or if we are reducing heat, then it can change the state also. In water, you take this as example. अगर आप उसको पानी normal जो tap water है, that is in the liquid state. If you are keeping it in the refrigerator, then what are you doing? Adding the heat or subtracting the heat? Subtracting the heat. I'm subtracting the heat. Because the refrigerator has got less temperature. So if you are keeping it in that temperature, then it will, what happen? Become into Solid state. It will turn into solid. Yes, it will turn into solid state. Then you take out that solid state water that is in the form of ice and keep it on the room temperature. You will see that after some time, there what is it having? Addition of temperature or removal of temperature? Ma'am, removal of temperature. Removal of temperature. कि जब आप आइस को बाहर निकाल रहे हो रूम टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर का रिमूवल हो रहा है उसमें से. No, ma'am, adding of temperature हो रहा है. Addition of temperature is there. Then it is melting. Because the temperature of ice is less. Temperature of ice is less and your room temperature is more. Then it is attaining that heat. वो capture करता है उस heat को. So that means by addition of heat, it is being converted into solid form to liquid form. अब वो liquid form में बदल गया. Now again, after
it has attained the room temperature. जब वो रूम टेम्परेचर पर आ गया तब वो क्या करोगे आप, उसको आप बॉईल करोगे. For boiling you will have to use your gas stove. Or heating, again you are what are you doing? Addition of heat or subtraction Addition of of heat. Ma'am, addition of heat. Addition of it. heat? Point has become clear. Addition of heat. Yes, you are adding heat, so the temperature will rise, and when it will attain the boiling point, that is 100 degree, then it will start boiling. So my point was that there is a change of state when we add or remove the temperature. Is it clear to all of you till here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बात clear हो गई? Yes, ma'am. Okay. Then we will come to the next one, next point, that is thermal expansion. Children, what is thermal expansion? Thermal expansion का मतलब क्या हुआ? Thermal का मतलब क्या हुआ? What is this thermal? Thermal means? Heat. Thermal means heat. जैसे थर्मोमीटर हम लोग बोलते हैं ना, तो थर्मोमीटर का मतलब क्या हुआ? हीट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट. क्लियर? तो हियर थर्मल मींस हीट और एक्सपेंशन मींस ग्रोइंग लार्जर. Ma'am, growing larger. एक्सपैंड. हाँ, जैसे कि आप कभी बलून को इन्फ्लेट किए हो? बलून को Yes, inflate किए. Yes, That is visible. That is why I am telling. वो visible है ये. वो who is this girl getting disturbed? आप प्लीज स्क्रीन ऑन करके और इधर उधर देखकर अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करो. बी इन द क्लास विथ योर माइंड ऑल्सो, नॉट ओनली विथ योर बॉडी, नॉट फिजिकली, मेंटली ऑल्सो यू शुड बी देयर. सो हियर thermal means providing heat and expansion means to increase, growing bigger, larger. तो आप ये बहुत अच्छे से देखते होंगे कि जब आप गैस फिल करते हो बलून में तो वो धीरे धीरे क्या होता है? फूलने लगता है. उसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं. दैट मे बी एक्सपेंशन, बट लिटरली उसको हम लोग एक्सपेंशन नहीं करते हैं, उसको इन्फ्लेशन करते हैं. दैट इज अ डिफरेंट वर्ड. इन साइंस चिल्ड्रन, there are certain technical words used for explanation of particular process. Clear? तो अभी हम वो बात नहीं कह रहे थे, हम आपको केवल एक्सपेंशन का प्रोसेस समझा रहे थे कि उसको हम इन्फ्लेशन ही बोलेंगे, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मीन्स टू ग्रो. जैसे कि अगर हीट से कोई चीज एक्सपैंड करता है तो दैट इज नॉट क्लियरली विजिबल. वो आपको विजिबल होता नहीं है, लेकिन आप उसको फील करोगे कि इट इज एक्सपैंडिंग. ये कैसे होता है ये आप देखो. मेटल्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग. दिस इज द कॉमन फेनोमेनन ऑफ मेटल्स. मेटल्स का ये फेनोमेनन आप ये चीज देख सकते हो थर्मामीटर में. जो लिक्विड फॉर्म में मेटल है मरकरी, विच इज इन द किंक, उसके किंक में है, और या बल्ब में आप कह सकते हो. तो that expands on heating because it is highly sensitive. वो उसमें expansion बहुत ही ज्यादा, मतलब आप बॉडी के टेम्परेचर को वो मेजर करने के लिए यूज किया जा रहा है. then you understand that how sensitive it is. And coming in contact with our body, it will expand. वो expand करता है. तो mercury being a metal, it is present in a liquid state, although all metals are in solid state, but this is an exception. ये हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं for your knowledge, but as we were talking in context with it. So this can be seen in other metals also. दूसरे metals में भी ये देखा जा सकता है. And a very good example we can take from our day to day. हम लोग अपने सराउंडिंग से ये एग्जाम्पल ले सकते हैं. You will see, you will tell how it is possible, ma'am. Yes, it is possible. Like, have you ever seen iron smith? जो लोहार होता है, iron smith लोहे का काम करता है. वो क्या करता है? What does it?
अगर कोई रिम होता है, जैसे आप रिक्शा में व्हील देखे हो ना, कार्ट में व्हील देखे हो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंदर Yes, ma'am. उसके एक रॉड पियर्स्ड रहता है, रॉड दिया रहता है ताकि वो व्हील रोटेट कर पाए उसको। तो उसको पहले रेड हॉट किया जाता है। जब वो रेड हॉट हो जाता है तो उसको उसके साइज से कम होल बनाकर उसके अंदर पियर्स कर दिया। वो एक्सपैंडेड है और एक्सपैंडेड कंडीशन में जब उसको हीट करता है, देखते होगे लोहार कोई भी काम करता है, अगर उसको आयरन का कोई भी आयरन मेटल से कोई भी इम्प्लीमेंट्स बनाना है, इंस्ट्रूमेंट्स बनाना है, तो पहले उसको रेड हॉट। व्हाई डज इट डू रेड हॉट? उसको रेड हॉट क्यों करता है? व्हाई? To break it down. हाँ To break Ma'am, to it give down. it to shape. Ma'am, to हाँ break Give it it down to and shape of our choice. Ma'am, to give it shape. हाँ शेप ठीक है, बट शेप व्हाई इट विल बीइंग डन ओनली ऑन दैट टेम्परेचर, रेड हॉट टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पर क्यों हो? Ma'am, Ma'am, because it's too hard. ma'am, because on heating it, To give metal in turn two into parts. semi-solid It's state too and hard. we can And easily when we shape heat it, it starts melting. हाँ Ma'am, to give into two parts. आप लोग पॉइंट पर आ रहे हो, उसको सॉफ्ट करना है, तो सॉफ्ट करने के लिए उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लाएंगे, उसको Yes, ma'am. पिघलाएंगे, Yes, तो वो ma'am. क्या होगा? सॉफ्ट हो जाएगा। जब सॉफ्ट हो जाएगा, आप देखते होगे जो टॉय क्रेयॉन्स आप लोग लेते हो या जो भी आप Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Crayons. टॉय क्ले जो होते हो, उसको क्या करते हो आप लोग? हाथ से ही उसको दूसरे दूसरे बर्ड बना देते हो, कोई डॉल बना देते हो, ऐसे कर सकते हो ना? यू कैन मोल्ड इट Yes, इन एनी शेप। yes Because ma'am, it's too soft. Yes, ma'am. बट व्हाट अबाउट द आयरन? आयरन इज वेरी हार्ड, वो आयरन तो बहुत हार्ड है, तो उसको भी हम अपने मेल्टिंग पॉइंट पर लाएंगे, सॉफ्ट करेंगे, और सॉफ्ट करने के बाद उसको हैमर और डिफरेंट प्रोसेसेस से फिर उसको एक प्रॉपर शेप। तो दिस कैन बी डन, दिस इज थर्मल एक्सपेंशन, ये थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद एक और थर्मल एक्सपेंशन इन द सेंस ऑफ उसका मेल्टिंग नहीं हुआ, वो जो कार्ट में व्हील में पियर्स करना हुआ, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। कार्ट व्हील का होल को छोटा कर दिया जाता है और इसको जब ये रेड हॉट है, एक्सपैंडेड फॉर्म में है, तब उसके अंदर पियर्स किया जाता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तब उसमें फिक्स हो जाता है, इट गेट्स फिक्स्ड इन। दूसरा एग्जांपल है, आपको कभी आप ब्रिजेस पे वॉक किए हो या व्हीकल से गए हो, कभी ma'am. वॉच किए हो ब्रिजेस को? yes ma'am, It is not made in one एक you can say one piece पे ब्रिज नहीं बनता है, पिलर्स होता है, and pillars Yes, are ma'am. getting पिलर्स एक दूसरे से कनेक्टेड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दो पिलर के बीच में हमेशा गैप छोड़ा जाता Ma'am, है। ma'am, स्वर्णिमा कुमारी के बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। Who's? मैम, स्वर्णिमा कुमारी। स्वर्णिमा, काइंडली म्यूट योर माइक। सौम्या, श्रेया भी आपका भी खुला हुआ है। अंशिका, उत्कर्ष, सब बंद करो अपना माइक, म्यूट करो। Others are getting disturbed. अमन वर्मा, सब बंद करो। अंशिका मिश्रा, अनुष्का वर्क्स, बंद करिए। All of you close. I just don't want to mute it from my side because I want the interaction in the class. Now, I was talking about thermal expansion, in which I was telling that the bridges have gap between the two pillars. ये gap क्यों होता है? Because when the environmental temperature will increase, there are lots of metallic rods inserted inside those pillars, and they will expand by attaining that temperature of the environment. And to avoid the cracks and damage in the bridges, there is a sufficient gap left between two pillars. दो पिलर के बीच में
सफिशिएंट गैप छोड़ा जाता है ताकि जब वो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ये राइज करे, देन इट विल expand, and that expansion and contraction can go on comfortably in the environment में अच्छी तरह से वो चल मतलब bridges damage नहीं हो और वो safe रहे. In for that it is this thermal expansion that bridges have gaps in. Then chemical change. Now these were the physical change that we can see. What about the chemical change? The chemical change is the form of change in which new substances are formed. Yes, in chemical change, always the new substance is formed. So this is utilized, that preparation of oxygen by using potassium chlorate and magnesium oxide is done in the laboratory because there is preparation of oxygen being done. So for that, two chemicals are taken as reactant, potassium chlorate and magnesium oxide, and then it is catalyst means that are used to enhance that process, and then oxygen is prepared in the lab. Is it clear? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? Any question you are having in your mind? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, then one No, of ma'am. you please read it. Read the topic. Abhigya 7. Ma'am, can Abhigya, I? please read it. Abhigya Yes, ma'am. Mishra. Ma'am, हाँ, चलिए. ma'am, शुरू. From Ma'am, from it temperature. Page 60. repeat change in temperature. Anshika, it's my turn, please. Page Ma'am, number कहाँ से 60 आप लिखिए. Abhigya Mishra, start from page number 60. Yes, ma'am. Heat and temperature. We often observe that when we heat a body, its temperature rises. This indicates that heat and temperature are related to each other. Heat is the energy of a body that is due to the motion of its constituent particles, Molecule. Temperature on the other hand, it is just a indicator of this energy. Even a cold object possesses heat energy due to the motion of its particles, molecules. When we add or remove heat from a body, motion of its molecules become faster or slower. Effects of heat. When the body is heated, various types of physical or chemical changes are observed to take place. We list below some of the main effects of heat. Physical changes. First, change in temperature. We all know that addition or removal of heat to or more or form a body bring about a change in its temperature. Addition of heat to a body usually rises its temperature, whereas removal of heat from a body usually lower its temperature. B. Change of state. Under appropriate condition, addition or removal of heat to or form a body can also From a body can it also is bring from with the from a body can also bring about a change in its state. For example, on putting a tray of water liquid form in the ice compartment of a refrigerator, the water freezes to form the ice. Ice, as we know, is the solid form of water. Similarly, when water is heated over a flame, it starts boiling and gets converted into steam. Steam, as we know, is the gaseous or vapor form of water. C. Thermal expansion. Most of solid, liquid, and gaseous are known as expand on heating. This phenomenon is called thermal expansion. For example, the metal rim to be
put on a cart wheel is designed to have a slight similar diameter than that of the wheel. Smaller Then diameter, smaller. Smaller It is diameter, smaller, not similar. smaller diameter than foot of the wheel. When this rim is heated, it becomes red hot, expands and slip on to the wheel easily. When it is cooled, it contracts and grips the wheel firmly. Chemical Chemical changes. Many chemical changes take places only when the reactants are heated up. For example, we can prepare oxygen in the laboratory by heating potassium chlorate along with magnesium oxide, along with magnesium oxide as a catalyst over a flame. Ma'am, do you know the? Yes, do you know? Do you know? It is interesting to note that ice and cast iron are two of the few solids that contract on heating. Cold water at 4 degrees Celsius is known to expand on cooling. This special property of water helps us to understand first why water pipes sometimes burst at very cold places, and second, a soft drink glass bottle often cracks when left in the freezer compartment for a long time. This is also linked with the survival of aquatic animals, even at place where the surroundings atmospheric temperature goes down below 0 degrees Celsius. Ma'am, हो गया? So this is also a very good examples given in do you know that when you can do this also. आप fully filled प्लास्टिक बॉटल ले लो और कुछ दिन के लिए फ्रीजर कंपार्टमेंट में छोड़ दो. आप देखोगे कि थोड़े दिन के बाद जब वो पूरा आइस बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रैक कर जाएगा. बिकॉज आइस एक्सपैंड ऑन कूलिंग. आइस जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वो एक्सपैंड करता है. एंड दिस हैपेंस इन दोज प्लेसेस वेयर देयर इज आइस फॉल. जहां आइस फॉल होता है और एक्सट्रीम -डिग्री में टेम्परेचर्स रहता है, वहां पे जो वाटर पाइप्स होते हैं दे गेट क्रैक. बिकॉज when it is getting converted, because this water in the liquid form will be there, and suddenly that when the temperature falls down, it changes into solid form, and those places the temperature remains for a longer period of time. That is why this expansion is seen over there. Then one very beneficial expansion process is that in those places where there is extreme coldness, then the ponds and lakes all freeze in the lower temperature, and that helps to protect the warmth of the water, and the aquatic organisms are safe. Aquatic organisms are kept safe inside the water. वो water के अंदर float कर सकते हैं. ऊपर वाला layer केवल ponds और lakes का जम जाता है, freeze होता है. So that is a very lower layer is to be same. lower layer is in the liquid form. वो liquid form में है, तो fishes और जो भी aquatic animals है उसको रहने में कोई problem नहीं. Now you all please underline the hard word. हाँ बोलिए. Yes. मैम, तो मैम नीचे का मैम जो पार्ट होता है मैम, जो लिक्विड में होता है मैम, वो